Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will talk about the mitosis. Now the cell cycle has two phases, endophase which is the preparatory phase and the mitotic phase. In endophase is divided into three substages or subphases, G1 phase, S phase and G2 phase. In G1 phase, cell prepare itself for the DNA replication. In S phase, DNA gets replicated, and in G2 phase, the cell prepare itself to enter into the mitotic phase or the cell division. Now mitotic phase. So mitotic phase or mitosis is also known as equational division. Why it is known as equational division? Because when the parent cell divide, it forms the two identical daughter cell, और इन दोनों डॉटर सेल के पास they'll have the same amount of DNA or the chromosome. Suppose ये क्रोमोसोम पेरेंट सेल का है एंड आफ्टर द रेप्लिकेशन इनका रेप्लिकेशन इंटरफेज में हो जाएगा, एस फेज के इंटरफेज में. अब रेप्लिकेशन के बाद व्हेन द सेल एंटर्स इनटू द माइटोटिक फेज और जब पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा, तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है इस सेल में और ये एक क्रोमोसोम इस सेल में चले जाएंगे. तो अब क्या होगा कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में था, आफ्टर द डिवीजन जो दो डॉटर सेल बने हैं उनके पास भी सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा. नाउ द माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल. सो सोमैटिक सेल्स जो हैं वो बॉडी सेल्स होते हैं. ये वो सेल्स हैं जो आगे चलकर टिश्यू और ऑर्गेनल्स या ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं. ओके और इनका डिवीजन जो है वो माइटोसिस से होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सोमैटिक डिवीजन. बट जो माइटोसिस है वो जर्म सेल्स में भी होता है. सी जर्म सेल्स पासेस थ्रू थ्री फेजेस, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज. सो मैच्यूरेशन फेज में तो मेयोसिस हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन फेज एज द नेम सजेस्ट, सेल्स मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? माइटोसिस फेज में आने के बाद, जब माइटोसिस होगा. नाउ द माइटोसिस फेज का जो ड्यूरेशन है इज अबाउट 30 मिनट्स टू 3 आवर्स. और माइटोसिस फेज में कुछ जो इवेंट्स होते हैं, जो कुछ चेंजेस होते हैं, वो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Now karyokinesis. So karyokinesis is divided into four stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now prophase. So prophase is the longest and the most complex phase, और वो divided होते हैं दो पार्ट में, early prophase and late prophase. So in early prophase, the nuclear membrane or the organelles or the न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन्स दे स्टार्ट डिसोसिएटिंग, वो डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं. और जो सेंट्रियोल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो तो रेप्लिकेट हो चुके होते हैं इन द एंटोफेज. अब माइटोटिक फेज में आने के बाद दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और उनके मूवमेंट के बाद, उनके मूवमेंट के साथ साथ स्मॉल फाइबर्स स्टार्ट अराइजिंग, और जो क्रोमैटिन होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट स्टार्ट कंडेंसिंग एंड फॉर्म्स द क्रोमोसोम. नाउ इन लेट प्रोफेज टू एस्टर्स फॉर्म्ड. मैं इसको एस्टर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दे लुक लाइक स्टार. एक्चुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रियोल एंड स्मॉल rays known as astral rays, and these astral rays gives them star like appearance. And these astral rays are not directly connected to the centriole. A small cytoplasm is present around the centriole which is known as the pericentriolar cloud. तो जैसे ये एस्टर्स मूव करते हैं towards the opposite poles, spindle fibers बनने शुरू हो जाते हैं, and these spindle fibers gets attached to the chromosome at the notochord. Now metaphase is the shortest and lasts for about 2 to 10 minutes. So in metaphase stage, the chromosomes are arranged at the equator of the cells and spindle fibers are attached to them. In these spindle fibers, जो कुछ spindle fibers जो कि क्रोमोसोम के नीटोकॉर से अटैच होते हैं, उन्हें हम नीटोकॉर फाइबर्स बोलते हैं. एंड सम स्पिंडल फाइबर्स दैट आर नॉट अटैच टू द क्रोमोसोम, और वो
उनको क्रॉस करते हुए दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं, these fibers are known as the non-notochord fibers. So metaphase is the most suitable phase to determine the number of chromosomes. Why? Because at this stage chromosomes are linearly arranged at the equator. तो इस फेज में क्रोमोसोम नंबर किसी भी सेल का डिटरमाइन करना ज़्यादा इजी होता है. Now, anaphase is very short and lasts for about 2 to 3 minutes. In anaphase, sister chromatids get separated from each other and start moving to the opposite poles from the equator of the cells. Now, at this point of the separation, different shape of the chromosome can be seen on the basis of the location of centromere. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि on the basis of centromere, the chromosomes can be divided into 4 parts: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Now, in metacentric, the centromeres are arranged in the middle, and when the spindle fiber attached to the centromere, और जब वह स्पिंडल फाइबर उनको खींचते हैं अपने ओर, they form a V-shaped structure. And in submetacentric, the centromere are arranged or are present slightly away from the middle point. And when the spindle fibers are attached और वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, they form L-shaped structure. The same way J and I-shaped structure forms. Now, telophase. See, telophase is just opposite to the prophase. In prophase, what we studied that nuclear membrane they get dissociated. क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म करना शुरू करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. बट इन टेलोफेज उसका जस्ट ऑपोजिट होता है. सो व्हाट हैपन इन टेलोफेज इज, इन टेलोफेज न्यूक्लियस इज रिकंस्ट्रक्टेड and the nuclear envelope start appearing slowly and slowly around each group of chromosome. As you can see in the picture कि यहाँ पर poles पर group of chromosomes are present और उनके around nuclear envelope arrange होना, form होना शुरू हो गया है. Now, as the nuclear envelope forms, the chromosome uncoiled itself and becomes long and cylinder. तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही एनवलप फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है वो वापस से अनकंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है. नाउ इन टेलोफेज सेल possesses 2 daughter nuclei from the parent nuclei. क्योंकि हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं और कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. So at the end of the telophase, 2 daughter nuclei forms and they will contain the identical set of chromosome. Now, as the nuclear envelope forms, the astral rays and the spindle fiber they start to disappear. और इसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो इनवेजिनेट होना शुरू कर जाती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू कर जाती है, so as to make the 2 identical daughter cells. Now, cytokinesis is the division of cytoplasm. तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन दे स्टार्ट इनवेजिनेटिंग, जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी पोल्स पर प्रेजेंट हैं ही. एंड दीज constriction is brought about by the actin and myosin microfilament. These filaments contract the cell membrane and divide the cell into 2 identical daughter cells.